हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग एज। लर्निंग एज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बिजनेस, फाइनेंस रिलेटेड डे टू डे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनको रेज करेंगे और उनको एक रियलिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज से कुछ साल पहले जब डेटा वाज स्केर्स वेयर इंटरनेट पेनिट्रेशन वाज नॉट वेरी हाई, तो people used to rely on books, physical networking to gain knowledge, to build your network. But आज के समय में there is too much of data. It is there in our mobile, it is there in our internet, it is there with various seminars held by the fin influencers, it is there on the podcast. But इसकी दिक्कत एक ये आती है कि we are not able to collate all that data and find a solution for our specific problem. So here we are trying to take an approach to identify a particular problem और उसको कैसे हम solve कर सकते हैं. The first problem that we are going to discuss today is unlocking success to business using business credit. आज एक छोटे बिजनेसमैन के लिए बिजनेस क्रेडिट इज foreseen as a burden. वो सोच रहे हैं कि it is a very big liability. But it is important to understand how can you use the day-to-day benefits that are available, the competitiveness in the market to your advantage and gain the best out of that. So here हमने कुछ topics जो हम cover करने वाले हैं. It is with respect to why business credit matters and what are the benefits of good business credit, how to build and improve your business credit, and how business credit impacts your business growth. So quickly हम पहले topic को cover करेंगे where business credit matters and what are the benefits of good business credit. So credit is something that you can use to your advantage. Uh, ये आपके लिए हमने presentation बनाया हुआ है जहाँ पे we have taken two balance sheets where one is with business credit and another one is without business credit. So let us take the without business credit first, wherein you can see that the draft structure of balance sheet जहाँ पे आपका capital infuse होता है and based on your capital you achieve an X amount of sale. से यहाँ पे 300 रुपीज का 100 रुपए के सामने आपने 300 रुपए की सेल अचीव करी और 5% मार्जिन से आपने 15 रुपए का प्रॉफिट कमाया. सो दिस वाज बेस्ड ऑन योर ओन कैपिटल. अब साल में कई बार ऐसा होगा यू वुड सी अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट जहाँ पे आपको गुड्स आर अवेलेबल एट अ लो रेट, जहाँ पे आपको आपके सप्लायर डिस्काउंट दे रहे हैं ऑन कैश पेमेंट, बट ड्यू टू योर लिमिटेड कैपिटल और एन existing working capital cycle, you are not able to avail any of those benefits. Whereas in the second case where we see where there is a business with credit, यहाँ पर उन्होंने एक क्रेडिट लाइन लेके रखी हुई है. It can be in the form of cash credit or an overdraft, and this allows them to use the opportunities that are available in the market uh, time to time and grow their sales. से 100 लगा के मैं 300 का सेल कर रहा था तो वही 200 लगा के मैं 600 का सेल कर पा रहा हूँ जिससे मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन रहता है. अब आप कहेंगे इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट लगता है, प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, वगैरह वगैरह. अग्रीड, ये सब चार्जेस आपको फेस करने पड़ेंगे, आपको बेयर करने पड़ेंगे, बट इट इज अ कॉस्ट टू द बिजनेस जो आप आपके कंज्यूमर को ऐड कर सकते हो. और अगर आपको कंज्यूमर को ऐड नहीं करने हैं, आप आपके सप्लायर से उतने डिस्काउंट के फॉर्म में अवेल कर सकते हो. सो दिस हेल्प्स यू टू ग्रो योर बिजनेस, एट द सेम टाइम मेंटेन अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री विथ योर सप्लायर. टाइमली पेमेंट आपका जाएगा जिसकी वजह से आपको क्वांटिटी डिस्काउंट या शायद कैश डिस्काउंट मिल पाएगा. ड्यूरिंग द ईयर प्राइस फ्लक्चुएशंस में आप स्टॉकिंग कर पाओगे गुड्स का एंड इवेंचुअली आपका क्रेडिट बिल्ड होगा. विच ब्रिंग्स अस टू आवर सेकंड टॉपिक इज हाउ टू बिल्ड एंड इम्प्रूव योर क्रेडिट. अगर आप रेगुलरली उनसे डील कर रहे हो with timely payments, timely cash payments, so this will eventually lead up to good rates, which will eventually lead to good margins, which will eventually lead to customer retention and satisfaction. So this is a cycle जो आप सेट कर सकते हो आपके बिजनेस के लिए, and eventually your business will grow. You will see that the customers are stick to you, they come to you, you are the first person whom they approach when they require goods, and
this can basically turn your business around 360 degree. So guys, this was a very simple and quick demo on the importance of business credit in growing a business. Hope you have liked it. uh, Subscribe the Learning Aid channel for more such content.